फर्स्ट क्वेश्चन देखो, Newton's law of gravitation is not applicable outside the solar system. He is used to govern the motion of satellites only, control the rotation of the satellites and planets, control the rotation of the motion of electrons and as well as of your atoms. What will be the answer, beta? Newton's law is applicable for, it is universal law, so it is applicable even between sun and as well as of your earth. So it is not applicable for outside the solar system is a wrong statement, beta. It is used to govern the motion of satellites only, बोल रहा है, ये भी wrong statement है. It controls the rotation of the motion, that means satellites, planets, etc. Yes. It controls the rotation of motion of electrons in the atoms. No, ये भी नहीं होगा. The only option, best option is right now for me, third one. ठीक है? Next one है good. Mass particles of 1 kg each are placed along x-axis at x is equals to 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter, so on up to etc. infinity. Then gravitational force on a mass of 3 kg placed at origin is, capital G is universal gravitational constant. कोई कर सकता है इसको? Mass of 1 kg being placed along x-axis, कहाँ पर? 1, 2, 4, 8, so on up to infinity. Then gravitational force on the mass of 3 kg which is being placed at origin. ठीक है ना? यानी सिस्टम ऐसा कुछ बनेगा बेसिकली, ये एक्स एक्सेस हो जाएगा, ये वाई एक्सेस हो जाएगा. ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पर एक मास है, ये कितना है मेरे पास 3 kg. फिर उसके बाद यहाँ पर ईच कितना है 1 kg, फिर उसके बाद 1 kg, फिर उसके बाद 1 kg, फिर उसके बाद 1 kg, सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है. कितनी दूरी पे रखा हुआ है बेटा? 1 मीटर. तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास 1 मीटर. फिर उसके बाद इस वन से 2 मीटर, उसके बाद ये 3 मीटर, उसके बाद ये 4 मीटर, वैसे चलते चलते गया अप टू इंफिनिटी. तो कितने फोर्सेस लगेंगे बेटा यहाँ पर? एफ नेट लगेंगे ना. तो एफ नेट ऑन 3 kg विल बी इक्वल टू हाउ मच? यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो एफ नेट विल बी इक्वल टू योर, आई कैन राइट दिस वन एज f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक, जहां तक जा रहे हो वहां तक. तो अब ग्रेविटेशन फोर्स लिखो, कैपिटल G. वन इज राइट नाउ फॉर मी 3 kg, अनदर इज 1 kg डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर. उसके बाद अनदर कैपिटल G into 3 into 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर. ठीक है ना? then plus, then again it will be equal to how much for me? Capital G 3 into 1 divided by, the next one is right now for me 3 square. 3 नहीं है, कहाँ पर है? x is equal to 4 है, sorry. Next one is given as 4 and next one is given as of your 8. तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 square plus next one is G into 3 into 1 divided by your 8 square. वैसे चलते चलते up to infinity जा रहा है basically. ठीक है ना? So this one I can take capital G into 3 will be outside and this will be 1 by 1 plus 1 by 2 square is 4 plus 1 by 4 square is 4 square is 16 plus 1 by 8 is 64 plus so on up to infinity. ठीक है ना? तब इनका कॉमन रेशियो कितना है बेटा? देख लीजिए एक बार. What is the common ratio right now in this one? What is the common ratio? Can anyone tell me? 1 by 4 is a common ratio. तो ये क्या हो जाएगा? ये geometric progression होगा. Geometric progression का infinity terms का फॉर्मूला याद है? S infinity is equals to A divided by 1 minus of R. ये क्या होगा बेटा? First term होगा. A is your first term and R is right now for me infinity. R is nothing but of your common ratio. R is your common ratio. तो R is कितना है यहाँ पर? 1 by 4 है और A की वैल्यू 1 हो गई. तो इसमें डाल दीजिए. That is equals to 3 into G. इंटू ये वाला कितना बन जाएगा बेटा? कहता बताइए. इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 by 4. So this value will become how much for me? 3G into 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. ऊपर चले जाएगा. This will be equal to 4 divided by 3. 3 will get cancelled, so it will be equal to how much for me? 4 times of your capital G. This one is G, right? So what is the best option I can write for that one? 4G. ठीक है ना? Next one. Gravitational force between two masses at a distance d apart is 6 Newton. If these masses are taken to the moon and kept with the same separation, then gravitational force between them will be. I told you gravitational force is independent of the medium present between them. अगर दोनों के बीच में distance same रहेगी, the force will always remain for me the same. So fourth option will be the answer for this one.
फोर्थ वन देखो बेटा, three identical bodies each of mass capillum are placed at the vertices of an equilateral triangle of arm length capillary, keeping the triangle as such by which angular speed the body should be rotated in their rotational field so that the triangle moves along the circumference of your circular orbit will be equal to how much, यानी ये पूरा रोटेट हो रहा है इन द सर्कुलर पाथ राइट नाउ। यानी अगर मैं इसको कहाँ से लूँ मैं इसको, ना ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दिस इज योर सर्कुलर पाथ, यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है, तो दिस इज फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है ना। थ्री आइडेंटिकल बॉडीज ईच ऑफ मास, ये हो गया कैपिटल एफ, ये हो गया कैपिटल एफ, और दिस इज आल्सो योर कैपिटल एफ, ईच ऑफ लेंथ इज गिवन एज ऑफ योर कैपिटल एफ, keeping the triangle as such by which angular speed the body should be rotated in their gravitational field so that the triangle moves along the circumference of this circular track, यानी this is right now rotating in the circular track part of relation। कोई भी एक पार्टिकल पे अगर मुझे फोर्स निकालना है बेसिकली, तो व्हाट विल बी द गिवन कंडीशन बेटा, क्या होगा बताइए। ऑल दिस साइड्स आर सेम, तो ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा राइट नाउ फॉर मी, इजंट इट। अगर मैं ये रेफरेंस ले रहा हूँ बेसिकली ऑन दिस वन, इजंट इट, तो कोई एक पार्टिकल आप रेफरेंस ले रहे हो बेसिकली, तो उस पे फोर्स कितना हो जाएगा राइट नाउ, याद है, वी डिड दिस वन ऑलरेडी, the three similar forces रह जाएंगे, net force will be equal to how much वर्क, F is equals to, कोई एक वन कॉर्नर पे फोर्स कितना हो जाएगा, F is equals to रूट 3 कैपिटल G कैपिटल M स्क्वायर डिवाइडेड बाई वर्क, कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी, कोई भी दो पार्टिकल के बीच की दूरी कितनी होगी बताइए, इन दोनों के बीच की दूरी, that is nothing but equal to your L, so this can be written as of your L square, है कि नहीं, ठीक है। Now it is rotating in a circular path, so this must be equal to centripetal force, so M into R will be equal to V square by R square है, V is equal to R omega लिख लो, तो we'll be getting this one as R into omega square is equals to capital G into your M square into your divided by L square into root 3, this square and this M will get cancelled, capital M and small m one in the same बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। So I need to get the value of your omega, R की वैल्यू कितनी होगी बताइए कोई, R is nothing but सेंट्रॉइड से ये सर्कुलर पाथ होगा ना, दिस डिस्टेंस सेंट्रॉइड से एनी वन कॉर्नर का डिस्टेंस कितना होता है बताइए, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, दिस इज योर L by 2, so I can say that R cos 30 degrees will be equal to L by 2, ठीक है ना, because this value will be equal to 30 degrees, ठीक है। So this value, if I'm simplifying it, what I'm getting here right now, R into cos 30 is root 3 by 2 into your L by 2, a2 चले गया, तो R value will be equal to L by root 3, so this could be written as of your L by root 3 into omega square is equals to G into M into root 3 divided by L square, आ गया, ओमेगा निकाल सकते हो अभी इसका, वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, लेट मी चेक, तो L square इधर चले जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू विल बिकम हाउ मच फॉर मी बेटा, रूट 3 इधर चले जाएगा, तो रूट 3 into रूट 3 हो गया रूट 3 into कैपिटल G into M into रूट 3 डिवाइडेड बाय योर, ये हो जाएगा मेरे पास L square into L, दिस विल बी L क्यूब, यानी रूट 3 into रूट 3 कितना हो जाएगा 3 कैपिटल G into your M डिवाइडेड बाय L क्यूब इज योर ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर 3G into your M डिवाइडेड बाय L क्यूब, small m is given as of your capital M, तो उसको capital M डाल के अगर लिखें तो what will be the answer for that one, नहीं सर फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, so it is 3 times of your capital G, नहीं तो बराबर है ना, देखो कितना आ रहा है, how much I got it, omega is equals to under root of your 3gm divided by L cube, so which option is matching there with, done, ओके चलो देखो आंसर करेक्ट आके से कंफ्यूज हो गए तो खाली भी चले जाएगा,
First option will be the answer. Very good. First option will be the answer. Next one. The value of universal gravitational constant G depends on. कोई बोल सकता है nature of material of two bodies, head constants of the two bodies, acceleration of the two bodies, none. It is a constant ना बेटा, ये किसी पे depend नहीं करेगा. None of the above will be the answer. Next one. Sixth one try करो एक बार. Four particles of mass m, 2m, 3m and 4m are kept in a sequence at the corner of a square of side A. The magnitude of gravitational force acting on a particle of mass m placed at the center of the square will be equal to your how much? Very good question. Can anyone try this one? But question number 6. Question number 6 देखिए. Four particles of masses m, 2m, 3m, 4m are kept in a sequence at the corners of a square of side A. The magnitude of gravitational force acting on a particle of mass m placed at the center of this square will be equal to your how much? Can anyone? Four particles है. यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास m है, isn't it? Another one is right now having your 2m. जैसा आपकी मर्जी शायद से लिख लेते चले जाइए, सीक्वेंस में लिख लेना है. मान के चलो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, this is right now for me m, this will be equal to your 2m, then this will be equal to your 3m, and this will be equal to your 4m. और ये हो गया इसका डायगोनल और ये हो गया इसका डायगोनल. दोनों के बीच की दूरी दे रखा है बेसिकली, isn't it? So each of them is being corners of a square of side ये वाला साइड ये है, ये वाला साइड ये है, ये वाला भी है, ये वाला भी है. तो डायगोनल जो बन जाएगा that will be √2 into your a बनेगा, ठीक है ना. और इसका हाफ कितना बनेगा बेटा? आधा अगर ले रहे हो तो इसका आधा वैल्यू कितना बनेगा? a by √2. So this value will become for me a by √2. ठीक है. अब देखो इसने क्या बोला, सेंटर पे एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास है राइट नाउ m, जिसका मास है राइट नाउ फॉर मी और m. Now calculate the net force acting on that one. तो वो पहले m और 3m के बीच में फोर्स लगाओ बेटा. कौन से डायरेक्शन में आ रहा है देखिए, m और 3m के बीच में. डन बेटा. m और 4m में कौन, 3m में कौन ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा? 3m वाला. तो नेट फोर्स विल बी इन विच डायरेक्शन? 3m माइनस ऑफ योर m, isn't it? तो यहाँ पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा राइट नाउ? 2f. 4m और 2m में दिस विल बी इक्वल टू अगेन 2f. फोर्स ज्यादा है ना बेटा. तो अब यहाँ दो फोर्सेस है तो इसका नेट फोर्स विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो 2f एंड 2f मतलब इसका रिजल्टेंट कितना बन जाएगा? 2f into √2. याद है? f net is equals to 2f into your √2. क्लियर? f देखो बेटा, इन दोनों के बीच में अगर मैं फोर्स निकाल रहा हूँ, एनी वन पार्टिकल राइट नाउ f and as well as of your m,
So this will be equal to your 2 root 2 into f की value, this value will be equal to your capital G into m into your m square divided by इन दोनों की दूरी, that is nothing but a by root 2 whole square. Okay, so this value will become for me a square 2 root 2 का whole square 2, तो ऊपर चले जाएगा 4 root 2 g into m square divided by a square. This will be the answer. Done, madam? आ गया? So what is the answer I can write here? 4 root 2 g into your m square divided by a square. ये खाली root 2 इसको जाना दे. Third option will be the answer. That's 4 forces को नहीं कर सकते आप. देखो पहले 2m और 4m के बीच में का फोर्स 4m is greater than 2m, तो 4m के जगह फोर्स नेट ऐड करेगा क्योंकि this will exert the 4m on this one and this will exert the 2f on this one, so net force will be 2f towards the 4m. m or 3m is more, so 3m will exert the m in the upward direction and 3m will exert the force on that one. That means 3f minus f, that will be equal to 2f are making an angle of 90 degrees, so f resultant will be 2 root 2 into your f. अब कोई भी दो पार्टिकल के बीच में की फोर्स ले लीजिए, g into m square मैंने ये स्मॉल m और ये मास के बीच में ले रखा है, तो सिंपलीफाई कर लो, विल गेट द आंसर. आ गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 6 इज गुड क्वेश्चन. डन. चलो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए. एनीवन? The tidal waves in the seas are primarily due to. Seventh one का आंसर B. The gravitational effect of moon on the earth. Very good. Eighth one. During the journey of the spaceship from the earth to moon and back, the maximum fuel is consumed again. कितना होगा बेटा? During the journey of the space from the earth to moon and back, the maximum fuel is been consumed in which case? देखो आप अर्थ से ऊपर जब जा रहे हो तो ग्रेविटी नीचे ऐड करेगी. अब जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ग्रेविटी भी नीचे है, आपको मोशन भी नीचे है, तो दोनों केस में फोर्स कहां ज्यादा लगेगा? कौन सा ऑप्शन? अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ इन द ऑनवर्ड जर्नी. वेरी गुड. ऊपर जाते से टाइम पे इट विल बी योर मोर. Then next one. Ninth one. If the distance between the center of the earth and the moon is capital D and the mass is 81 times that of the moon, at what distance from the center the gravitational field is right now for me? 0. डायरेक्ट क्वेश्चन है, बोलना है. शॉर्टकट फॉर्मूला याद है आपको? व्हाट इज शॉर्टकट फॉर्मूला बेटा? नल पॉइंट के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला x is equals to फोर्थ वन आ रहा है, x is equals to d divided by under root of your m2 divided by m1 plus of your 1. ठीक है ना? दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? The distance between the center of the earth and moon is right now for me capital D. यानी this one is right now for me capital D divided by mass of the earth is 81 times. मतलब this one if it is your mass and this is your moon. दोनों के बीच में की distance D. Capital M is equals to 81 times of small m.
यानी अंडर रूट ऑफ योर कैपिटल M is right now for me your M. This will be 81 into your M plus 1. MM gets cancelled. So that is equals to capital D divided by 1 by root 81. 9 9 is 81 plus of your 1. This value will become how much for me? LCM will be 9 and you get 10. Then 90 divided by 10. Fourth option will be the answer for this. Sure, very good. Gravitation is the phenomenon of interaction between point masses, any arbitrary shaped masses, planets only, none of this. Gravitational force is a phenomenon of interaction between any arbitrary shaped masses. It may be between Ames Hyderabad and Ames Delhi. It may be between the bench and as well as if a person sitting on that one. कुछ भी हो सकता है. It's not only between the point masses. Done. Next one. Two point masses M and 4M are separated by distance d on a line. A third point mass M0 is to be placed at a point on the line joining, such that the net gravitational force on it is right now for me or 0. The distance of that point from the mass M will be equal to how much? Again, direct shortcut formula लगा लीजिए. X is equals to your d divided by under root of your M2 divided by M1 plus 1. 2 point masses यानी M1 की वैल्यू हो गई मेरे पास M और M2 की वैल्यू हो गई मेरे पास 4M. So this value will be equal to your D divided by under root of your 4M divided by M plus 1. MM gets cancelled. So that is equals to D divided by root 4 मतलब 2 plus 1. That will be equal to your D divided by 3 beta. D by 3 will be the answer for this. That 12th one तो अपन करे already. 3 particles A, B, C, each of mass M are lying at the corners of an equilateral triangle of side L. If the particle A is released, keeping the particle B and C as fixed, the magnitude of instantaneous acceleration will be equal to your how much? Force तो मालूम है अपने को. F net on any one corner कितना निकलता है बेटा? F net is equals to root 3 times of your F. Isn't it? That means that will be equal to your root 3 into G into your M square divided by उन दोनों के बीच की दूरी right now triangle. This one is right now for me L square. This is your F net. And इसको acceleration में निकलो. That is equals to your M into your A is equals to your this one is root 3 beta. So this one is root 3 G into your M square divided by L square. This M and this square will get cancelled. So acceleration will be equal to your root 3 G into your M divided by your L square. Fourth option. The satellite, in a satellite, if the time period of revolution is t, then the potential energy is proportional to. So मैं क्या बोल रहा? In a satellite, say plus third ला बेटा. Square of the time period is directly proportional to r cube, isn't it? Or energy right now, potential energy is proportional to your how much is asking. In a satellite, if the time period of revolution is t, then the potential energy is proportional to your how much? T power 1 by 2, T power 3, T power minus 2 by 3, T power minus of 4 by 3. Can anyone give me the answer? Third option are T power minus of, okay. Potential energy will be equal to your how much? अगर मीटिंग एंड हो गई तो रिजॉइन कर लो बेटा और 10-15 मिनट के लिए. ठीक है. थर्ड ऑप्शन आ रहा टी पावर माइनस ऑफ यूर पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है ना बेटा. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला G into M1 M2 डिवाइडेड बाय R. तो R की वैल्यू अगर लिख रहा हूं मैं राइट नाउ फॉर मी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू यूर पावर अगर इधर मैं भेज दूं, सो R will be equal to T power of minus 2 by 3 because U is inversely proportional to R power minus 1. तो इसमें से मैं अगर R लिखूं, R is equals to or R is proportional to T power of your 2 by 3. तो ऊपर आ जाएगा तो it is minus of your 2 by 3. Very good. Third option will be the answer. Next one. The torque on a planet about the center of mass 0. कल ही क्लास में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को. Gravitational constant it depends on size of the bodies, gravitational mass, distance between the bodies, none of this one. Okay. Following curve shows the variation of intensity of gravitational field with the distance from the center of this solid sphere. Solid sphere के लिए मैंने बताया था right now. Solid sphere के लिए center के पास क्या रहेगा बेटा? There will be certain amount of your
क्या होगा बताइए? स्ट्रेट लाइन रहेगा, isn't it? Intensity of gravitational field with a distance will be equal to how much? Anyone? So fourth option, sir, 16th question. डायरेक्शन के साथ दिखना बेटा, विद मैग्नीट्यूड। अपन जो डायग्राम लिखे थे विद मैग्नीट्यूड लिखे थे। फील्ड की डायरेक्शन कभी भी होना, सो द फॉलोइंग कर्व शोज द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी फील्ड विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर के पास से अगर ये स्फीयर है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स दी, अगर मैं यहाँ पर एक पार्टिकल रखूं, दिस विल बी टुवर्ड्स इन दिस डायरेक्शन, यानी इसका एग्जैक्टली मिरर इमेज होना, इसका एग्जैक्टली मिरर इमेज होना, दैट मींस दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन। एक्चुअली फोर्थ ऑप्शन ही रहेगा, बट डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो दैट विल बी योर फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन रहता है दैट विल बी ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, isn't it? ग्रेविटेशन फील्ड का जो फॉर्मूला है दैट इज कैपिटल G m into your x divided by r cube, दैट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द पार्टिकल, तो माइनस के साथ रिप्रेजेंट करना है। 90% अपन फोर्थ ही लिख के चलते हैं 99% केसेस में, लेकिन ये थोड़ा आप लोग को ध्यान रखना है कि राइट नाउ हियर इज आस्किंग द इंटेंसिटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर, सेंटर से बाहर नहीं, सरफेस से अंदर जा रहा है, तो इट विल बी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना? Assume that the tunnel is being dug through the earth from north pole to south pole and that the earth is non-rotating uniform sphere of density rho. The gravitational force on a particle of mass m dropped into the tunnel when it reaches the distance r from the center of the earth will be equal to how much? तो उस पे force कितना हो रहा है? तो देखो when you are dropping it right now for the given condition, force will be equal to how much? बेटा center पे, earth is right now solid sphere, तो ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला G into mass of earth, mass of the particle into r divided by your radius r cube, ये फॉर्मूला है ना अपने पास। mass is the density, density is equals to mass by density is equals to your mass by volume, और mass is equals to volume into density, तो mass of your earth अगर लिख रहे हो that will be equal to 4/3 pi into your capital R cube लिखोगे into density लिखोगे, तो फोर्स हो गया कितना बेटा मेरे पास, F is equals to G, this will be equal to 4/3 pi into your r cube into your rho into small m into your r divided by capital R cube, so capital R cube gets cancelled, so force will be equal to how much for me, 4/3 pi into G rho into your m into your r, and a force will be directly proportional to your r, बाकी के पूरे तो constant हो जाएंगे, so what is the best option I can write here, 4/3 pi G rho into your r, यानी second option. Very good. Next one, suppose the acceleration due to gravity at the Earth's surface is 10 meter per second square and at the surface of the Mars is 4 meter per second square. A 60 kg passenger goes from Earth to Mars in a spaceship moving with a constant velocity. Neglect all other objects in the sky. Which part of the figure best represents the weight of the passenger as a function of your time part relation? And see यहाँ पर suppose the acceleration due to gravity of Earth's surface is given 10. And the surface of the Mars is 10. Is 10 kg passenger is going from Earth to Mars, isn't it? So मान के चलो this is your Earth and it is going towards your Mars, isn't it? Force will be directly proportional to the product of their masses, isn't it? M1 and M2, and force is inversely proportional to the square of the distance between them, isn't it? तो straight तो होगा ही नहीं, isn't it? So F is inversely proportional to your r square. Gravitation is inversely, because F is equals to mg लिखोगे ना बेटा, mg will be proportional to your r square. So gravity is inversely proportional to your r square. कौन सा होगा बताइए? Which is best representing rectangular hyperbola? ये तो नहीं होगा, D भी नहीं होगा क्योंकि ये नीचे जा रहा है rectangular hyperbola, C भी नहीं होगा, it is just touching क्योंकि rectangular hyperbola मतलब ऐसा कुछ आएगा. So only the curve which is right now possibly I can see here right now is diagram B. B must be the best example. B कहाँ हो जाएगा, rectangular ऊपर जा रहा है, so B and C में देखना है बेटा.
बी एंड सी में देखो क्या हो सकता है, विच इज द बेस्ट ऑप्शन? ए तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो डैम श्योरली आई कैन omit the option number D and I can omit the option number A. B or C में which is more steeper that should be taken into consideration. यानी C I can take into the best option. 17 में force versus time is asking ना सर, force versus time नहीं पूछ रहा बेटा, time कहाँ पूछ रहा? Is asking the gravitational force acting on a particle of mass m dropped into tunnel when it reaches the distance r from the center of the earth ही पूछ रहा है, time के साथ नहीं पूछ रहा, ठीक है? So in question number 8, acceleration due to gravity on the surface of the earth is this one, neglecting all of the which part of the best represents with the neglect, weight versus your time. S is equals to V into T, so T is equals to your S divided by V. Time is directly proportional to your displacement, T is directly proportional to your R होगा, ठीक है? कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, एक्चुअली आर ही देना चाहिए था वो। डन। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, mass has a diameter of approximately 0.5 that of the earth and mass of 0.1 of that of your earth. The surface gravitational field strength and the mass as compared to that of the earth factor will be equal to how much? तो g का फॉर्मूला लिख लीजिए, we know the formula, g on earth divided by g on your earth दे रखा mass will be equal to mass of your earth divided by mass of your mass into radius of your mass whole square divided by radius of your earth का whole square, ठीक है ना? We know the order directly formula ना बेटा, small g is equals to capital G capital M divided by r square, इसमें से दोनों का रेशियो ले रहा हूँ, isn't it? So that is equals to your mass of your earth, mass of your mass is 0.1 times of mass of your earth into this one is a 0.5 into r of your e whole square divided by r e square, ठीक है ना? So this value will be r e square will get sense, me will get cancelled, so 0.5 divided by 1.1 मतलब 1 by 10, so 10 divided by this one and a 0.5 will be equal to how much? 5 by 25 and 2.5. 2.5 divided by 0.1 is 1 by 10, है ना? 0.1 ही था, उसको क्या करना है, ठीक है ना? So that will be equal to how much? G on your moon will be equal to your कितना रहा देखो, 0.1 divided by 0.5 into G on your earth. 0.1 मतलब कितना हो जाएगा 1 by 10, 2.5 मतलब कितना हो जाएगा 25 into 10, ये वाला चलेगा into G, isn't it? तो देख लो